हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो आज की जो हमने व्यू बनाई थी, अगर आप लोग को याद होगा, मेरा व्यू था कि मार्केट थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन करे और फिर बेसिकली नीचे आए और यहाँ पे 30,600 के आसपास कहीं पे बैंक निफ्टी एक्सपायर करे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग ए परफेक्ट एक्सपायरी। और मैंने रेंज भी आपको दिया था 30,900 टू 30,600। but this is probably for some kind of news market 30,600 के नीचे ही सीधा गैप डाउन हो गया और यहाँ पे आया, बट अल्टीमेटली ये 30,600 के आसपास इसने क्लोज किया। दैट इज व्हाट आवर व्यू एनीवे कि बैंक निफ्टी विल क्लोज अराउंड 30,600 जो हुआ, बट दिस गैप डाउन एंड दिस मूव वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ग्रुप ने मैंने बोला 30,200 is basically a support which was our this slide 30,250 was a support और बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी चीटिंग करने की कोशिश करी अराउंड जस्ट वन स्पाइक ऑफ 50 पॉइंट्स एंड इट वेंट अप जैकपॉट। बहुत लोगों ने अपने ग्रुप में ये जैकपॉट लिया भी, हम लोग यहीं पे कहीं पे निकल गए थे एंड इट वेंट अप वेरी वेरी हाई, बट एनीवे दैट्स फाइन। और निफ्टी का मैंने आपको टारगेट दिया था कि निफ्टी ये ब्लैक लेवल से बेसिकली 590 वाज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जाके गिरे तो बेटर रहेगा, 590 अगर नहीं पहुंचता ना, ये कैसे ट्रेड करेगा अभी निफ्टी में बताता हूँ कि मैं वीकली व्यू ऐसे साथ बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ, आई डोंट नो बिकॉज वीकेंड में आई एम नॉट अवेलेबल। तो आई जस्ट इफ आई टेक ए डेली काइंड ऑफ निफ्टी वाला चार्ट नो, सी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बोला है टाइम साइकिल एनालिसिस के हिसाब से आई वाज एक्सपेक्टिंग 11 to 15 इज बेसिकली ए downside. Okay, I was not expecting a Thursday as downside, but ये आज ही डाउन हो गया। तो टाइम एनालिसिस में क्या होता है, देयर माइट बी ए वन डे एरर इज पॉसिबल। ओके, टाइम एनालिसिस परफेक्ट नहीं होता है, वन डे प्लस और माइनस इज वेरी कॉमन। तो ये पूरा अपमूव पे अगर आप देखोगे यही एक बड़ा डाउन आया है जो हमने 11 को बोला था पर ये 10th को हो गया। तो 11 Monday, Tuesday, up to 15, I'm expecting market to go stay in the down mode. That means upside is ideally capped market mein, okay? And this trend line is anyway going to cap it. So how I'm expecting Nifty, okay? This is just purely from the experience of and character of the market that I have been seen in the past. So tomorrow, actually, I'm expecting a candle like this. I would expect a gap up and a red closing. Okay, so this is how I would be expecting tomorrow's candle. Okay, and the Mondays and Tuesdays candle also, no. Monday and Tuesday candle also, what I'm expecting is ideally, don't make sound good. What I'm expecting is ideally it should be in the same range. That means Nifty 590 जाके अगर गिरता तो बहुत अच्छी बात होती, but probably Nifty should stay between this trend line 13,540. अगर कल निफ्टी 13,550 क्रॉस नहीं करता है ना, तो देन माय व्यू इज मंडे और ट्यूसडे भी ये क्रॉस नहीं करेगा। ये 13,550 एंड 13,400, ये जो 150 पॉइंट्स की रेंज आपको दिख रही है, यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कंसोलिडेशन कैंडल्स। ओके, दैट मीन्स अपसाइड भी नहीं दिखाएगा कंसोलिडेशन विल बी इन द डाउन साइड। ओके, एंड ज्यादा से ज्यादा डाउन साइड इज अराउंड 13,400, ये 13,400। ओके, आज जहां से गया है, तो 13,400 worst case we will come back here 13,350, not below that. Okay, now from here 16 to 24 I have a bullish view anyway entire week from Wednesday. So in that case bank Nifty can come back to here. That is actually the weekly view. I'm doing the weekly view because I may miss the weekly view in this weekend. So tomorrow, so if we look at tomorrow's trading is expectation of candle is this, both Nifty and Bank Nifty. See, expectation से भी market का भी उल्टा कर सकता है, right? Sometimes your technicals may not work because of news or whatever. But अगर market की price structure हम लोग देखें, if you look at the market's price structure, I'm expecting a candle like this. Can this candle be red or can this candle be green? If people ask the question, this candle can also be green. Okay, but in that case,
Okay, but in that case, what will happen ideally is that means Nifty has to open gap down if this candle has to go green. I am expecting Nifty not to cross 13,525.30 level tomorrow. That is one scenario. So if it is seeing you green, as I said, 13,550 crossing in next 2-3 days would be difficult, including Friday, Monday, and Tuesday. Okay, that's the view. So if Nifty heavily gap down hota hai, then we may see a green candle. In that case, you will see the candles basically starting from here and closing here, but this is still below 13,500. In that case, you might see a green. That means the trend, the short-term trend, you will see downtrend, though it is a green candle. Okay, I hope everybody is clear what I'm trying to tell. Bank Nifty may be same candle patterns banega. So we'll start the trading from Bank Nifty side. So Bank Nifty may, if the candle has to be red tomorrow, okay, if the candle has to be red tomorrow, Bank Nifty flat to positive. अगर फ्लैट ओपन होता है देयर आर वेरी हाई चांसेस के मॉर्निंग में थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ से बेसिकली वी हैव ए सेल 13,600. देयर आर टू लेवल्स हियर एंड दीज आर गुड लेवल्स ओके टू सेल. तो 13,620 के आसपास से हमें एक सेल मिलना चाहिए जैसे आज की सेल मिली थी. ओके, if Bank Nifty opens flat and goes up, or it opens flat, let's say exactly flat, a little bit down and comes here. ये gap down scenario मैं बाद में बताता हूँ. Flat to positive, and then Bank Nifty will come down. Why it will, tomorrow? I'm not expecting Bank Nifty to fly. Okay, जैसे इस तरह की fly, I'm not expecting Bank Nifty to fly. Bank Nifty should consolidate to bearish if it is opening flat or gap up. अगर बैंक निफ्टी देखो गैप अप होता है ना अराउंड दिस लेवल 13,670 के नीचे कहीं पे भी गैप अप होता है एंड यू सी फर्स्ट 5 मिनट्स एज रेड कैंडल नो देन सेल कीपिंग डेज हाई एज योर स्टॉप लॉस सेल. माय व्यू इज 9 मॉर्निंग से अगर ये सेल चालू होता है 5 मिनट्स एंड देन 15 मिनट्स कैंडल्स आल्सो sustains as red, I'm expecting Bank Nifty to stay down in entire first session. That means up to 11:30 I would like to see Bank Nifty down. Okay, Bank Nifty इस केस में अगर डाउन आता है, this scenario, time and scenario, Bank Nifty if it is coming down in this case, you have a very high probability of Bank Nifty stopping here. Okay, 30,400 ये लेवल में 2 दिन से बोल भी रहा हूँ आपको. बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक लेवल दिया था 13,334. बैंक निफ्टी में सिमिलर डू और डाई लेवल इज 30,400. so 30,400 से देयर आर वेरी हाई चांसेस के मार्केट कैन गो अप एंड कंसोलिडेट हियर लाइक दिस. ओके, दैट मींस वन सिनेरियो इज लाइक दिस, come down, okay, come down and give a buy from here and ideally kind of consolidate here like this. Okay, or around this level. This is scenario 1. You can ये scenario याद रखना. अगर 5 minute red बनता है, I would love to. Generally, I don't trade before 9:30 anyway, so I will wait for 15 minutes. But 9:30 तक, if you are seeing red, then up to 11:30, I am expecting market to be staying in red before a buy comes. Now, if it is falling very heavily like this, okay, if it is falling very heavily, then this level will again act as a support जो हमारा आज का level था 30,250 अगर आता है. But I don't think market will come here because Axis Bank is positive, ICICI Bank looks to me positive. Okay, sell on rise है but they are not like ultra bearish. Okay, we'll go to the stocks anyway. So here this is one scenario. ये scenario याद रखना आपको. हम लोग सिर्फ बैंक निफ्टी में सेल कब नहीं करेंगे. बैंक निफ्टी इन फर्स्ट 15 मिनट्स दैट मींस बिफोर 9:30 इट सस्टेन्स अबव 30,700. 510 में है तो फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो 9:30 से पहले इफ इट इज गोइंग अबव 30,700 एंड सस्टेनिंग यू विल नॉट सेल. यू विल वेट फॉर बैंक निफ्टी टू कम डाउन बिलो 30,650. सो दिस एरिया, this zone will be my selling zone. If it crosses this zone and stays above, then I'm not selling. Okay, I may not buy because I'm not in a mood of buying Bank Nifty like a rocket tomorrow. So I'll generally look for sell on rise market tomorrow. So this zone is sell, but if it stays above here, then you will not sell. That's the only advice. I will not advise you to buy, but don't sell. Okay.
Now buying level is here and buying level is here ideally हमारा depending upon price action and कहाँ पे आपको rejections मिल रहा है and timing के ऊपर. That means if around 11:30 यहाँ तक होता है तो 11:30 से I am expecting a buying around 11:30. Okay, तो 11:30 से यहाँ पे तो यहाँ से buying लो, यहाँ पे market है तो यहाँ से buying लो. ठीक है, buying would be less tomorrow, selling would be good. Okay, sell on rise view में selling would be good. Okay. And basically, yeah, so what I was telling, yeah, so buying here at this level and selling may you might get a faster selling tomorrow. Buying may you may not get this kind of buying may you will get buying like this. Can you see this? Okay, so it might hit a lot of stop losses if you are in buying, but if you are in a buying, make sure that you do a in the money buying tomorrow rather than an at the money buying or out of the money buying. Okay, that is the only advice I will give you, even if you are buying here and here, because in that case your stop loss hitting will be less. Okay, at the money may it will hit your stop loss if market is going like this. Okay, if you are a buyer. Okay, right, so that is the advice on bank nifty को कल मैं 30,200 के नीचे ऐसे भी नहीं देख रहा हूँ. So the range for me, this is the worst case. Ideal range for me would be 30,700 to 30,350. 350 points का range. Worst case range is यहाँ से 500 points का range. India VIX अगर देखूं, yeah, India VIX is down a little bit and around 18. So India VIX ये मैंने ग्रुप में पहले भी बोला था. Whenever India VIX at around 18, it is a screaming buy. You should not sell, and that is why you see this kind of buyings. Okay, this is a kind of emotional sell by the market, gap down and emotional sell by the market. At India VIX 18, ideally we would expect it to buy. तो buying में ट्रेड गलत जाने के मुझके चांसेस बहुत कम है कल भी, tomorrow also. आज तो हमने ये बाइंग भी लिया था. We took this buying, not sorry, we took this buying and we took this buying, both the buying. Okay, so यहाँ पे भी हमारे अच्छे पैसे बने थे और यहाँ पे भी अच्छे पैसे बने थे because of this level 200 का लेवल, 30,200 का लेवल. Okay, so bank nifty, those are the two scenarios on upper side. Downside ideally अगर bank nifty by chance gap down हो जाता है unexpectedly जैसे ये है, okay, बाई चांस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन हो जाता है तो ऊपर जाता है तो भी सेल करो, आप यहाँ से सेल कर सकते हो आइडियली. ओके, अगर गैप डाउन होके ऊपर जाता है तो यहाँ से सेल कर सकते हो. ओके, ये जो पिवट का लेवल है 30,500 से भी सेल कर सकते हो. अगर बैंक निफ्टी हेविली गैप डाउन हो जाता है, जो हमारी जनरल थ्योरी होती है, अगर दैट मीन्स 30,250 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है 930 940 तक, बाई चांस 300 पॉइंट गिर जाता है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर न्यूज एंड ऑल दोस, then also in that case you are not buying, you are selling up to this trend line which is our S2, which is around 30,000. okay, 30,000 अगर ये सिनारियो होता है, मेरे को थोड़ा रेयर लगता है बट होता है तो then take a sell from here to here, 200 पॉइंट सेल इजीली आप ले सकते हो फ्यूचर में. जैसे हमने यहाँ पे लिया था आज फ्यूचर, यहाँ पे लिया था फ्यूचर में 100 पॉइंट्स. ये मैंने ग्रुप में चार्ट भी डाला था, बाइंग दिया था मैंने और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डे लो के पास एंड हमने 100 पॉइंट की फ्यूचर बुकिंग करी थी. It was a 1 to 10 risk reward scenario. Only this swing. Okay. Anyway, this is the jackpot. तो निफ्टी ठीक है, निफ्टी में आ जाते हैं. निफ्टी में tomorrow the levels that are going to act as a strong resistance is around this 13,522, worst case 13,560. okay, worst case 13,560. तो अगर बैंक निफ्टी इतना बड़ा गैप अप होता है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि निफ्टी गैप अप ओपन हो, और अगर गैप अप ओपन हो जाता है 520 के ऊपर, देन हम लोग वेट करेंगे 560 के आसपास, ज्यादा से ज्यादा 550 के आसपास, 550 टू 560 के रेंज से हम एक सेल लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्राइडे के हिसाब से मेरा व्यू रेड कैंडल का है आइडियली. ओके ना, एंड वहां से अगर आप सेल ले रहे हो तो आइडियली पिवट तक आपको लेना है, 450 तक आपको लेना है. अगर निफ्टी कल बाई चांस गैप डाउन हो जाता है तो ऐसे भी सेल हो जाएगा, ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा, ये लेवल के नीचे 13,400 के नीचे सेल कर दो, ये जो डे की लो है. ओके,
13,400 के नीचे सेल करो आराम से अप टू 13,351। ये 50 पॉइंट लेके जा सकते हो, क्योंकि पहले तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके आएगा। ओके, ऊपर से हमारी थ्योरी जो है S1 के नीचे अगर जाता है फर्स्ट 30-40 मिनट्स में, हम लोग ऐसे भी सेल लेते हैं, तो ये 50 पॉइंट का सेल आप इजीली ले सकते हो निफ्टी में। बट दिस सिनेरियो लुक्स टू मी रेयर, बट यू नेवर नो, डोंट मिस द सिनेरियो। अगर ये हैपन होता है आज जैसे हुआ, ठीक है, इन दैट केस इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू कम बैक, तो हम लोग सेल में ही रहेंगे। आई वुड नॉट रिकमेंड एनी बाइंग इन गैप डाउन सिनेरियो, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, बाइंग आई एम ओनली गिविंग यू in a scenario where market gapping up, coming down till 1130, and 1130 से it is giving buying from pivot and this yellow level, जो बैंक निफ्टी में भी yellow level है, which is around 450. okay, 13,450 उस केस जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला था सपोर्ट से, यहाँ पे भी निफ्टी में सपोर्ट से 13,420. ओके, दिस इज बाइंग 1, बाइंग 2, 11:30 के आसपास जहां पे भी लेवल हो आप वहां से बाइंग कर सकते हो, आइदर दिस लेवल और दिस लेवल। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड निफ्टी। स्टॉक्स का हम एक बार देख लेते हैं वेदर इट इज सपोर्टिंग आवर ट्रेड्स और नॉट। या एचडीएफसी बैंक सेल ऑन राइज होगा अगर गैप ओपन होता है। कोटक बैंक इज द ओनली बैंक आई विल वेरी, सो दिस इज द ओनली बैंक व्हिच इज प्रोबेबली बुलिश। ओके, तो ओनली कोटक, अगर आप सेल में हो तो सिर्फ कोटक बैंक को मॉनिटर करो। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक पोजिशनली पॉजिटिव हैं, बट कल ये सेल ऑन राइज सिनारियो में है। ठीक है, इंडिकेटर आप दिख रहा होगा आपको, सेल ऑन राइज सिनारियो में है, तो गैप अप अगर होते हैं तो आप सेल कर सकते हो अगर रेट लाइन बनती। इंडसइंड बैंक भी सेल ऑन राइज है, ठीक है, 15 पॉइंट ऊपर ज्यादा से ज्यादा, देन सेल ऑन राइज। और रिलायंस अगर मैं देखूँ ये भी सेल ऑन राइज ही है। ओके, सो दैट मीन्स वो निफ्टी के हाई से सेल देगा आपको, एंड इट डजंट हैव ए it have a support also, that means that is telling कि निफ्टी एक रेंज में रहने की पॉसिबिलिटीज है। दैट मीन्स कल आपको दोनों साइड की ट्रेड मिलेंगे, बोथ बाइंग और सेलिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है। दैट इज व्हाई आई सेड कल एचडीएफसी बोल देते हैं, एचडीएफसी जो है ये भी सेल ऑन राइज है, ठीक है, और सपोर्ट भी इसका है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो कल जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बोला कि कल कैंडल रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, दोनों बन सकता है। ओके, द ओनली थिंग इज ओपनिंग कहाँ पे होता है। दैट मीन्स अगर ये हैवी गैप डाउन ओपन होता है तो कैंडल ग्रीन ही बनेगा, बट ये कल आज का डे का हाई क्रॉस नहीं कर पाएगा। दैट इज माय व्यू। ओके, और अगर गैप अप बनता है तो 100%, ऑलमोस्ट 100% के ये कल रेड कैंडल बनेगा, दोनों। सिमिलर व्यू इन बैंक निफ्टी, अगर ये गैप अप होता है तो ये रेड कैंडल बनेगा। ओके, अगर ये गैप डाउन होता है रेड कैंडल बनेगा, बट इट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस 30,600 अगेन, इसके नीचे ही बनेगा ग्रीन कैंडल अगर बनता है। दैट मीन्स द शॉर्ट टर्म इज गोइंग टू बी बेयरिश, व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग टिल वेडनेसडे। ओके, तो दैट इज द वीकली व्यू एंड टुमारोज व्यू, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। बाकी जो होगा कल आप लाइव में देखना, मैं probably morning में first 1 or 2 hours रहूंगा, उसके बाद अवेलेबल नहीं रहूंगा, but there are other genius people in the group, they will help you out and help you out to take the trades. Thank you very much. Good night. Jai Mata Di.